Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम सुषमा। थैंक यू राजेश। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi says India expects full support from SCO for a reformed multilateralism that reflects today's global realities. Equity benchmarks zoomed to log fresh record highs amid mixed global cues. Sensex crosses 43,000 mark. Nifty index closes above 12,600 level. And gold declines 662 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शंघाई सहयोग संगठन SCO के देशों से मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप संशोधित बहुपक्षवाद के लिए पूरे समर्थन की उम्मीद रखता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले रुख के बीच निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से घरेलू शेयर बाजार अब तक के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचे। सेंसेक्स 43,000 के स्तर से ऊपर पहुंचा। निफ्टी 12,600 के आंकड़े को पार कर गया और दिल्ली सराफा बाजार में सोना 662 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शंघाई सहयोग संगठन SCO के देशों से मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप संशोधित बहुपक्षवाद के लिए पूर्ण समर्थन की उम्मीद रखता है। SCO सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की 20वीं शिखर बैठक को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, लेकिन उसके मुख्य लक्ष्य अभी भी अधूरे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड का मुकाबला कर रहा विश्व संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अगले वर्ष से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा और उसे SCO देशों से समर्थन की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से SCO चार्टर में उल्लिखित सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ये खेद की बात है कि बार बार आपसी मुद्दों को संगठन के एजेंडा में शामिल करने की कोशिश की जाती है, जो SCO चार्टर और शंघाई मूल भावना के विपरीत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कठिन समय में भारतीय औषधि उद्योग ने 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े टीका उत्पादक देश के रूप में भारत इस महामारी से निपटने के लिए अपनी सारी क्षमताओं का उपयोग करेगा। सुषमा जी, एक महत्वपूर्ण कह लें कि बात प्रधानमंत्री ने उठाई है, जो शंघाई सहयोग संगठन है उनके राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करते हुए अगले वर्ष से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने वाला है अस्थायी भारत, और उसे समर्थन की उम्मीद है SCO देशों से। इस पूरी बैठक पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, किस रूप में यह संभव हो सकेगा? देखिए, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भाषण दिया है। क्या वर्चुअली है, आजकल तो सब कॉन्फ्रेंसेस वर्चुअली किए जा रहे हैं और उन्होंने ये बहुत टाइमली बात कही है ये वैक्सीन्स के बारे में। हाल ही में ये बात आई है कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने कहा कि उनकी वैक्सीन तैयार है, लेकिन बहुत सारी वैक्सीन की अभी तैयारी हो गई है, उनकी ट्रायल्स हो रही हैं।
और उनमें से उनकी प्रोडक्शन सेंटर अब हमारा देश बनने जा रहा है। और इस वजह से और हम हमारे देश में वैक्सीन के अलावा हम और चीजें भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब देखिए पीपीई किट्स जो पहले हमारे देश में बिल्कुल ही नहीं बनती थी, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो और पहले वेंटिलेटर्स हम ले रहे थे और देशों से, अब मैन्युफैक्चर तो कम से कम कर रहे हैं। तो ये चीजें जो प्रधानमंत्री ने कही है, इस वक्त जो पैंडेमिक जो क्राइसिस चल रहा है पूरे विश्व भर में, वो बता रहे हैं कि इस पूरे जो माहौल में भारत का बहुत बड़ा रोल होगा। और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों को इसीलिए बता रहे हैं कि ये कम से कम उनकी सपोर्ट इंडिया के साथ होनी चाहिए। जब वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा तो एससीओ की सपोर्ट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया भी इन टर्न इन देशों का भी सपोर्ट करेगा इन चीजों के साथ कि ये इस क्राइसिस में उनकी मदद करेगा। आइए चलते हैं बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज भी निवेशकों ने अच्छी खासी लिवाली की और प्रमुख सूचकांक नए ताजा स्तर पर पहुंचकर बंद हुए। सेंसेक्स 43,000 के स्तर से ऊपर पहुंच गया है पहली बार, जबकि निफ्टी 12,600 के आंकड़े को पार कर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 680 अंक यानी 1.6% की उछाल लेकर अपने नए उच्चतम स्तर 43,278 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 170 अंक यानी 1.36% बढ़कर 12,631 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो थोड़ी सी कमजोरी यहां देखने को मिल रही है। छोटी और मझोली कंपनियों में अपेक्षाकृत थोड़ी सी बिकवाली दिखी है। आज बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.1% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.48% की गिरावट हुई। Equity benchmarks today zoomed to log fresh record highs amid mixed global cues. The BSE 30 share index Sensex crossed 43,000 mark, while the NSE Nifty 50 index ended above 12,600 level. The Sensex climbed 680 points or 1.6% to settle at 43,278. The NSE Nifty 50 index also surged 170 points or 1.36% to settle at 12,631. On the other hand, the broader market at BSE declined, underperforming the Sensex. The BSE mid-cap index slipped 0.1% and the BSE small-cap index depreciated 0.48%. In the Sensex pack, shares of 20 companies climbed while 10 logged losses. Bajaj Finance was the top gainer as it skyrocketed 8.8%, followed by IndusInd Bank, which zoomed 7.7%. Larsen & Toubro surged 7%. Bajaj Finserv Limited climbed 6.4%, while HDFC and SBI Bank jumped more than 5.5%. On the other hand, Tech Mahindra lost 5.9%, HCL declined 5.4%, while Nestle India and Infosys both fell around 4%. In sectoral indices, 13 out of 19 sectors appreciated. In gainers, shares of finance sectors gained 3.9%, BankX rose 3.6%, and capital goods gained 3%. On the other hand, healthcare and IT both plunged more than 3.5%. The overall breadth of the BSE trade was negative as 1,512 shares declined, 1,208 shares climbed, and 171 remained unchanged. रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर हुआ, 74 रुपए 18 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के 92.74 के आसपास बना रहा। Sushma ji, the equity indices continued to surge for the 7th straight session today, with both BSE and NSE scaling new heights, as we have communicated already, as global investors applauded progress in the development of a coronavirus
vaccine which lifted confidence for a faster world economic recovery. That's one good news that we all have been waiting for. Right, Sushma? Yes, of course. Yeah. Sorry? Yeah. Your comment is what I'm soliciting. Yeah. So the rebound in global stocks as well as in India, I mean, it is a direct reaction to this news about Pfizer saying that they have a vaccine. And what is more important, the other reason, that the markets have reacted so strongly is not just that there has been a vaccine that is, likely to come on the market. The fact is that there is a 90% effectiveness of this vaccine, according to Pfizer. Now, currently, the vaccines that so far have been talked about have 40 to 50% efficacy ratio. And if you have a vaccine with 90% efficacy, then you bring it to the level of the vaccines that we currently use, for instance, like measles, that are used regularly for vaccines. So this is a vaccine that probably can be used in the long term and can be highly effective. At the same time, while the markets have reacted, global markets obviously have reacted. In the U.S., there is also the issue of the election of a new president, and that has also brought some amount of cheer to American markets, and this kind of cheer has spread all over the world. And in addition, the issue of the vaccine has come. But to be realistic, this vaccine will take a few months, not just a few months, but quite a few months to actually come on the market, because many steps have to be taken before it actually reaches the consumers. Okay. सुषमा जी, बाजार में यदि देखें तो अमेरिका में चुनाव के परिणाम जो आए उसके बाद से कह लें लगातार उत्साह बना हुआ है। थोड़ा और पहले से ही भारतीय शेयर बाजार अपेक्षाकृत अधिक मजबूती दर्शा रहा था। अब जो ये तेजी का सिलसिला शुरू हुआ है और बहुत तेज गति से लगातार ऊंचे उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी नए मानक तक पहुंचते जा रहे हैं, नए कीर्तिमान पर पहुंचते जा रहे हैं। ये तेजी का सिलसिला तात्कालिक है या बुलरन की दौर एक बार बाजार में शुरू होते देख रही हैं आप? देखिए, ये जरूर अभी ये बुलरन थोड़े दिन चलेगा। दो तीन वजह हैं। एक तो हमने बात कर ली है, ये वैक्सीन की जो बात है इससे जरूर तेजी आई है मार्केट में। दूसरी बात है हमारी जो डोमेस्टिक जो कंसिडरेशन है, इस वक्त जो फेस्टिवल डिमांड आ रही है प्रोडक्ट्स की और ये इतनी खरीदारी भी हो रही है, तो जो डिमांड की जो लैक्यूना था हमारे मार्केट्स में वो अब वापस आ रही है। और जो फेस्टिवल डिमांड शायद हर साल आती है, लेकिन इस साल इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी डिमांड होगी। तो तीसरी बात ये है कि बाकी जो आंकड़े आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर सेक्टर डेटा जो आ रहा है वो अभी काफी अच्छा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये कंट्रैक्शन नहीं होगा इस साल, क्योंकि पहले ही क्वार्टर में आपके 24% डिक्लाइन हुआ है। कंट्रैक्शन तो होगा इस साल, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं है अभी तक। खैर, वो आगे वाले दिनों में देखना है कि ये जो फेस्टिवल डिमांड है ये दिसंबर तक चलेगी कि नहीं। Coming back to how the markets fared today, Sushma, banks and the financial stocks were in focus during the trade, giving them boost. In fact, they are rallying on improved business outlook post Q2 results, end to the moratorium and bounce back of economic activities, which you just mentioned. What, according to you, would be the future of the banks and the financial sectors going forward? And if you could throw some light on IndusInd Bank, particularly, which zoomed 7.7% today. Well, generally, overall, the banking sector has really got a lot of cheer in the last 2 days because of the news of the vaccine. Because if you have a vaccine, then you are presuming that, well, we have a vaccine where, people in the world will slowly be vaccinated and they will be, they will get immunity from this disease, and therefore normal economic activity can begin. And once normal economic activity begins, the first point at which you start that is the banks. It is the banks which start the lending to all the industrial sectors, to all the consumers.
and that is why the focus on the banking sector. Therefore, you had the entire range of whether it was public sector, private sector, financial services, all the entire range has shown a rise, because this is the beginning. When you have an economic recovery, or you start with the bank, and then banks would definitely, the confidence of banks to lend will improve, knowing that probably in 2 to 3 quarters you are going to have, as I said, normal economic activity, and therefore the repayment of the loans of credit will definitely be far more assured. So that's the real reason behind the banking sector surge. As for IndusInd Bank, IndusInd has recently shown, great. Its performance has been very good, and it has the NPAs have declined. I think gross NPAs have come down to about around 2.5% or 2.2%, sorry, and net NPAs have come down to 0.5%. So the performance of the bank has generally been vastly improved in recent times, and that is why the focus on IndusInd Bank. But it is also benefited from the general surge in the entire banking sector. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजारों पर, जहां कुल मिलाकर आज तेजी दिखी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन पर प्रगति संबंधी खबरों से उत्साहित निवेशकों ने आज पर्यटन, विमानन और यात्रा से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की अच्छी खासी खरीदारी की, जिसके चलते बाजार में तेजी बनी रही। गौरतलब है कि दवा कंपनी फाइजर ने कहा है कि जर्मनी स्थित सहयोगी बायोनटेक SE के सहयोग से कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण में 90% से अधिक सफलता मिली है। इसका अनुकूल प्रभाव आज बाजारों पर दिखा है। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स आज 3.7% की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हिंगसेंग में 1.1% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.3% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% ऊपर आ गया। हालांकि बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% घाटे में रहा। यूरोपीय बाजारों की ओर चले तो समाचार तैयार किए जाने तक कुल मिलाकर लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.2% ऊपर चल रहा था। फ्रांस का CAC 40 0.9% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। उधर जर्मनी का डैक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर बना हुआ था। The Dow Jones Industrial Average and S&P 500 logged a strong gain yesterday as positive vaccine news boosted investor sentiment. On the other hand, big technology stocks ended with another loss. The Dow Jones Industrial Average surged 3% and the S&P 500 climbed 1.2%, while the Nasdaq Composite Index plunged 1.5%. Sushma, there's been an encouraging run on the back of the COVID vaccine news that we saw across the Wall Street yesterday, and also, today in Asia as well. Does this overshadow any concerns on stimulus in the near term? Well, no, I don't think that this overshadows that, because the stimulus is still being awaited in the U.S. and the expectation is that the new president will come in and they will reach some agreement in their Congress and provide it. Now, the tussle between the president and the Congress has been over the size of the stimulus because one of the political parties, that is the Democratic Party, wants larger stimulus and the Republican Party wants smaller stimulus. So this is the tussle that is going on in the U.S. Now, of course,
you have a new president. But how and when this decision will be taken, given the fact the new president only takes office in January, has yet to be seen. Okay. So I think for the time being, the markets, you can say, really is, it is just buoyant basically on the fact that there is a new vaccine in the works, and, normal economic operations are going to do very soon. So what does it say in terms of the emerging markets, particularly India? Will we continue to see fund flows pouring in now that the vaccine has come in, and everything is going to be all right, and markets are doing pretty well in the US? Sorry, you'll have to repeat it. The line was breaking. No, I just want to know, what about the emerging market like India? Will we continue to see the fund flows coming into India? Well, for the time being, yes. You will continue to see that because, there is the easy money policy continuing in the US. And for the time being, we can expect the continuation of FII inflows. But, of course, it has to be seen what will happen in the coming days, what the Federal Reserve will decide on interest rates and on this easy money policy. सुषमा जी, एक और कोरोना वायरस है, उसकी वैक्सीन बाजार में आने की खबरें हैं। दूसरी ओर आज जो एशियाई बाजारों में खास तौर से दिखा है कि एविएशन से जुड़ी हुई, ट्रेवल से जुड़ी हुई और टूरिज्म से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उनमें निवेशकों ने अच्छी खासी लिवाली की है। एक और जब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो कोविड हैं, उनके मरीजों की संख्या में ताजा लहर दिख रही है, दूसरी ओर उसकी दवा भी, यानी उसका टीका कह लीजिए कि सफल रहा है बड़े पैमाने पर। अब इसके परीक्षण और होंगे और उसके बाद फिर वो वायरस, यानी वो कह लें टीका आ जाएगा। कुल मिला के इन सब खबरों से बाजार किस दिशा में जाता दिखेगा वैश्विक स्तर पर? And also, Sushma, related to what Manoj just asked you, could the same be replicated in India as well? He mentioned about the travel, leisure, hospitality, and economy-linked names doing pretty well in Asian markets, other Asian markets, and in the US as well. So, would we be replicating that in our context also? देखिए, जो आपने कहा ये जो लेजर और हॉस्पिटैलिटी वगैरह, वो विश्व भर में है और इंडिया में भी है। अगर आप देखिए आज की जो मार्केट में इंटरग्लोब के जो शेयर प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, शॉपर स्टॉप के बढ़ गए हैं, काफी सारी ट्रैवल कंपनीज के बढ़ गए हैं, काफी सारी जो रेस्टोरेंट कंपनीज हैं उनके बढ़ गए हैं। तो हमारे देश में भी हो रहा है, ये विश्व भर में भी हो रहा है, क्योंकि एकदम से ये जो कंपनीज हैं ये वैसी हैं जहां आपको किसी को, कंज्यूमर को खुद को फिजिकली जाना पड़ता है। आप फिजिकली रेस्टोरेंट में जाएंगे, फिजिकली आप एयरप्लेन में जाएंगे और फिजिकली आप होटल में जाएंगे। तो ये जो एक तरह से एकदम जो बाउंस हुआ है, ये मेरे ख्याल में थोड़े दिनों तो रहेगा। लेकिन अगर ये इस वैक्सीन का जो टाइम है बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर से आप थोड़ा इसमें धीमापन देखें। लेकिन अभी काफी चेयरफुल आउटलुक है और मेरे ख्याल में कुछ दिनों तो ये जो चेयर है ये शेयर मार्केट में दिखाई देगा। Okay, I'm going to divert to the retail inflation figures. India's retail inflation likely is to stay above 7% for a second straight month in October, as supply distortions led to a surge in vegetable prices, especially onions. We all know how difficult it is, these days because the prices have really gone up. So does it not lower chances of further interest cuts? Well, if this 7% continues, it is definitely going to make the Reserve Bank pause in its next meeting. Of course, we have to remember that a large chunk of it, as you pointed out, is vegetable prices. Vegetable prices, generally, this is a seasonal thing.
around this time, around September, October, November, you do find a seasonal rise in vegetable prices. So if these decline as they seasonally do by maybe the end of this month, then we should expect some easing of inflation. However, if the situation continues, we know, as you rightly pointed out, onion prices have gone up. A few other vegetables have also gone up. But normally, as winter comes, these prices of these vegetables do come down. So we have to wait and watch, because with as a result of the pandemic, the supply and logistics issues have also become difficult. So one really has to wait and see. Okay, your very, very quick take on the figures that I'm going to be giving you. This is regarding the country's exports, which grew 22.47% year on year to $6.75 billion in the first week of November. What do you have to say? This is definitely a good news, and clearly shows that demand is picking up in our major markets, and it's our major markets are the U.S., Europe, and of course Southeast Asia also. But these are the two major areas. If our exports have gone up significantly, I think it's really good news. We should be happy. Moving on, the oil prices today added marginally amid reports of progress towards the COVID-19 vaccine. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $42.80 per barrel, while WTI crude prices were around $40.50 per barrel. चलिए सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक थोड़ी सी फीकी रही है। सोने का मूल्य 662 रुपए घटकर 50,338 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 1,431 रुपए फिसलकर 62,217 रुपए प्रति किलो रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य $1,877.70 प्रति आउंस पर रहा, जबकि चांदी $24.20 प्रति आउंस के स्तर पर बनी रही। बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे, सोना अब और जो बाजार की स्थितियां हैं उसमें ऊपर जाता दिख रहा या सस्ता ही रहेगा? देखिए, सोने का जो भाव है वो सेफ हेवन एसेट है, और अभी जो वैक्सीन की खबर है, फिर से इसका असर सोने पे लगा है, क्योंकि अगर वैक्सीन आ गई तो सेफ हेवन एसेट्स की जरूरत नहीं है, लोग बाकी एसेट्स की तरफ जा सकते हैं, इसलिए इसका भाव कम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी आपका श्रोताओं की ओर से। Thank you, Sushma, for being with us. And before we close, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India expects full support from SCO for a reformed multilateralism that reflects today's global realities. Equity benchmarks zoom to log fresh record highs amid mixed global cues. Sensex crosses 43,000 mark. Nifty index closes above 12,600 level. And gold declined 662 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.